Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and listeners, today we are going to begin presentation 14, page number 147, unit 15 and level 1. And the title of the presentation is Expressing Obligation. Expressing mean bayan karna, obligation paraiz zaruri काम bayan karna. Here we will talk about Hesta. About what? Hesta. Here they have said Pablo has to go to the office. यानी Pablo को ज़रूर दफ्तर जाना है. Pablo has to go to the office. Melanie has to clean the house. Melanie को ज़रूर घर की सफाई करना है. He has to study, she has to study. And then the past activity say, what is Pablo doing this weekend? Answer me, what's Pablo doing this weekend? He has to go to the office. Good. He has to go to the office. Yeah. So we will talk about hesta and hefta. Actually, the pronunciation is hesta and hefta and hesta. Two न कहना चाहिए हमें. The native speaker pronounce it ta. Actually, the correct pronunciation of this is ta, not two. Two is that one. Two. And this is ta. If we look at the phonetic description, so we will see like that, and that is the short symbol of a. And if we look at this one, so we will see in this way two. ये ऊ sound है true और ये a sound है ta. Inshallah we will discuss them in level 4 in detail, how to pronounce a word correctly. These are phonetic description and phonemes we will discuss in level 4. So the correct pronunciation is hesta or hefta. In grammar point of view, hesta and hefta are what? Semi auxiliary. इमदादी फेल है लेकिन semi नीम इमदादी फेल है, semi auxiliary है. And we use it for what? Duty, obligation and responsibility. Duty mean farz. Your duty we know the meaning of duty. We also use it for zimadari. Zimadari. Our responsibility means zimadari, and obligation we use it for farz also. Obligation also mean farz. And the common structure is that one, that first of all we use subject, then hesta, then verb first form, and then rest of the sentence. Or hefta, you know that we use hesta with singular. When the subject is he, she, it or singular noun, we use hesta. Bilal has to recite the Holy Quran. Aisha has to walk at home. Right? And hefta we use for plural. When the subject is you, we, they are plural noun, then we use hefta. Already we have discussed his and hef in detail in the tenses and in the activities. So his with singular and hef with plural. And after hesta or hefta we use a verb past form. And hesta or hefta means zarur. इसका माना क्या है? ज़रूर. कि ड्यूटी है, फ़र्ज़ है, एब्लिगेशन है, ज़िम्मेदारी है आपके एक बंदे का. और एक डियर व्यूअर्स ओनली हैज़ और हैव है. अगर जब इसके साथ है टू नहीं हो, हैज़ हो या हैव हो, तो फिर ये हम ज़्यादातर डिलेक्सिकल वर्ब है. मुख्तलिफ़ कामों के लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर हम ये डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, बीमारियों के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, बिलाल हैज़ हेडेक, बिलाल के सर में दर्द है. एंड आई हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द है, बीमारियों के लिए. काशिफ हैज़ फीवर, बुखार है. एंड यू हैव फीवर, आपके बुखार है. सिमिलरली वी यूज इट फॉर रिलेशन. फॉर व्हाट? रिलेशन, ताल्लुक़ या रिश्ते के लिए. बिलाल हैज़ 3 ब्रदर, बिलाल के 3 भाई हैं. आयशा हैज़ 2 सिस्टर, आयशा के 2 बहनें हैं. एंड यू हैव 5 सिस्टर, यू हैव 3 ब्रदर्स. राइट? यू हैव 200 फ्रेंड्स. फ्रेंड्स भी एक किस्म का रिश्ता है, तो रिलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं. और इसीलिए हम ये पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. पोजीशन मीन कब्ज़े के लिए, जब हैज़ या हैव अकेले हो. फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से दैट बिलाल हैज़ अ मार्कर, बिलाल का एक मार्कर है, मीन मार्कर बिलाल के कब्ज़े में है. आयशा हैज़ अ कार, आयशा की एक मोटर है, मोटर उसकी कब्ज़े में है.
राइट। वी हैव अ हाउस, हमारा एक घर है ये, वी हैव अ हाउस, हमारा घर है, घर मतलब हमारे कब्ज़े में है। जब नॉन लिविंग थिंग बेजान चीज़ें आती हैं तो ये रिश्ता ज़ाहिर करती है हैव के बाद। जब कोई इंसान आते हैं तो फिर ये रिश्ता ज़ाहिर करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग के साथ ये कब्ज़ा ज़ाहिर करती है। और जब कोई रिलेशन आती है तो फिर ये रिलेशन ज़ाहिर करती है, ब्रदर सिस्टर्स एट्सेट्रा या फ्रेंड्स। सो हैज़ या हैव और हैफ्टा और हैस्टा के दरमियान फ़र्क है, ये टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, right? I think you will have learned the difference between hesta and hefta, as well as the difference between has and have, right? Now we see this weekend in the weekend या हफ्ते, these are Bilal activities and these are Aisha's activities. Aisha will do these and these things and Bilal will do these and these things. So we have to discuss these. When we are talking about the responsibility, the duty or the obligation, so we use this structure. For example, if I ask you what does Bilal have to do this weekend, Bilal को इस हफ्ते क्या करना है, what does Bilal have to do this weekend? सो ही बिलाल तो मेल है, सो ही हैज़ टू क्लीन द हाउस, उनका ये जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है कि घर की सफाई करे, क्योंकि सफाई वाला कोई और नहीं है। सेकंड, ही हैज़ टू गो टू मर्दान, उन्हें मर्दान भी जाना है, वहाँ से कुछ ख़रीदना है और कोई नहीं है जानने वाला। थर्ड वन, गुड, ही हैज़ टू बाई वेजिटेबल, उन्हें सब्ज़ी भी ज़रूर ख़रीदना है, क्योंकि और कोई नहीं कि वो बाज़ार जाकर सब्ज़ी ख़रीदे, उनकी फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है, ड्यूटी है कि सब्ज़ी ख़रीद ले। नेक्स्ट वन, गुड, ही हैज़ टू अटेंड द गेस्ट, ये उसकी फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है कि गेस्ट को अटेंड करे, मेहमानों को मेहमान नवाजी करे। थर्ड वन, ही हैज़ टू वॉश द कार, कार भी गंदा है और उनको भी ज़रूर साफ़ करना है, वॉश करना है, तो उनकी ज़िम्मेदारी है टू वॉश द कार। और अगर मैं आपसे पूछ लो व्हाट डज़ आयशा हैव टू डू दिस वीकेंड, आयशा को क्या करना है, शी हैज़ टू आयरन द क्लॉथ, उनकी ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ है कि कपड़ों को इस्त्री करें। अदर, गुड, शी हैज़ टू कुक द मील, मील का पकाना भी उनकी फ़र्ज़ है। नेक्स्ट वन, शी हैज़ टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, उन्हें इम्तिहान के लिए स्टडी भी करनी है। एंड अनदर वन, शी हैज़ टू हेल्प हर मदर, उन्हें अपने माँ की मदद भी करनी है, क्योंकि और कोई है नहीं कि अपने माँ की मदद कर ले। नेक्स्ट वन, शी हैज़ टू वॉश द डिशेज़, उन्हें बर्तन भी धोनी है, और कोई नहीं है, बर्तन तो गंदा नहीं पड़े रहेगी। शी हैज़ टू वॉश द डिशेज़। एंड द लास्ट वन, शी हैज़ टू गो टू द डॉक्टर, उन्हें डॉक्टर भी ज़रूर जानी है अगले हफ्ते, क्योंकि वो बीमार है और डॉक्टर के साथ मुलाकात करनी लाजमी है। अभी आप मुझसे पूछ ले बिलाल के बारे में। Good. He has to clean the house. He has to go to Mardan. He has to buy vegetable. He has to attend the guest, and he has to wash the car. Now the second one about Aisha. Ask me. What does Aisha have to do this weekend? God. She has to iron the cloth. She has to cook the meal. She has to study for the exam. She has to help her mother. She has to wash the dishes, and she has to go to the doctor. Cloth mean बगैर सिले हुए कपड़े, और clothes जब es हो तो ये सिले हुए कपड़े जो बनाए गए हैं। So she has to iron the clothes. Right? I think, dear viewer, you will have learned the use of hefta or hesta when you are talking about obligation, when you are talking about duty or responsibility. You should use hesta or hefta. For example, you have to study for the exam, and Bilal has to study for the exam. He has to study for the exam. Thank you so much for watching the video.